The topic we are going to discuss about is fundamental principles of organic chemistry. And the subtopic is functional group. So what is a functional group? An atom or group of atoms, a double bond or triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds. So functional group एक atom भी हो सकता है, group of atoms भी हो सकता है, double bond भी हो सकती है और triple bond भी हो सकती है. They are called so because they are chemically functional parts of the molecules. So here we have some examples. यहाँ पे we have double bond as well as atoms, so it is of carboxylic acids. This one is of alcohol, जबकि यहाँ पे we have a triple bond that represents alkyne. So जो भी family है उसकी specific properties होती है. So functional group जो है वो किसी भी family को, किसी भी molecule को specific properties impart कर रहा होता है. The study of organic chemistry is organized around functional groups. Each functional group defines an organic family, like carbonyl compound, जिनके हम further classify करते हैं into aldehydes and ketones or alkanes. Here we have some functional groups. Alkane, we have just single bond. Alkenes में we have double bond. Alkynes में we have triple bond. Arene में we have a benzene ring. Halides में we have a halogen atom attached. Alcohol में we have OH. Ether में दरमियान में ऑक्सीजन एटम होता है और दोनों साइड्स पे उसके कार्बन एटम बॉन्ड बना रहे होते हैं. और अमाइन में वी हैव CN. And the list continues toward nitrile. We have C triple bond N. Nitro में we have NO2. Sulfide में we have sulfur between two carbon atoms. Sulfoxide में we have an oxygen atom. Sulfone में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं सल्फर के साथ अटैच. Thiol में we have SH group. Carbonyl में you all have already familiar with C double bond O. एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के एक साइड पे H प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन जो है उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है वो सेंटर में होता है और उसके दोनों साइड्स पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. ईस्टर में वी हैव कार्बोनाइल कार्बन के साथ we have ऑक्सीजन बॉन्डेड. अमाइड में वी हैव NH2 विद कार्बोनाइल कार्बन. कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में OH की जगह पे we have substituted with halogen atom. और कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड में हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिहाइड्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो H2 है वो रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो है दरमियान में आके बॉन्ड बनाता है. Here we have some practice MCQ. Which one of the following is not a dicarboxylic acid? And the options are phthalic acid, benzoic acid, adipic acid, or oxalic acid. And the correct option is benzoic acid. Benzoic acid में we have just one COOH group attached to the benzene, जबकि बाकी सब में हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. The next question is which one is a thioether? ROR, RSER, RSR, RTER. And the correct option is RSR. फिर थायो जो वर्ड है वो सल्फर के लिए यूज होता है और ईथर में हम दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स ऐड कर रहे होते हैं. So which of the following class has not been correctly matched with their general formula? And the options are following. So you can see aldehyde में हमारे पास एक साइड पे H होता है ना कि R. So it is not correctly matched. So it would be the correct answer. जबकि ketones में we have R. Phenol में भी we have OH attached to the aryl group. जबकि carboxylic acid में भी COOH present. So this was all about the functional groups. I hope you have understood it well. And thank you so much.